find automorphism of Z10. That means we have to find all the automorphisms, all the functions from the group Z10 to Z10 which are isomorphism. That is automorphism. Okay. Now there is a trick of finding this problem. Okay, so let us solve. Okay, so what is Z10? First thing you have to know what is Z10. Z10 is equal to 0 से start होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, और कुछ है क्या? 10 नहीं आएगा. 0 से n-1 तक, n is equal to 10, right? So भाई ये है, these are the elements of Z10. Now what we have to find? Automorphism of Z10. Since there is a trick, we will use the property of automorphism. First thing, we will determine how many automorphism we are to find. How many automorphism this Z10 have. Since automorphism, this is the property, automorphism preserves the order of an element. ये आप प्रॉब्लम में लिख भी सकते हैं, लिखिएगा तो बहुत अच्छा होगा, नहीं लिखे तो कोई बात नहीं. Since automorphism preserves the order of an element, so if phi is an automorphism, A is an element in Z10, then phi of A इसका जो ऑर्डर होगा, राइट, इसका जो ऑर्डर होगा वो A का जो ऑर्डर होगा उसके बराबर है. phi of A, order of phi of A is equal to the order of the element A. That means ये phi क्या करते हैं, A एलिमेंट को phi of A में, okay, so image of A under phi is phi of A. इस A को phi में phi A, image of A is phi A, and इसका जो ऑर्डर होगा और इसका जो ऑर्डर होगा दोनों का ऑर्डर सेम होगा, राइट. ओके, सो ये बात, इसको हमें एज आवर ट्रिक वी विल यूज. ऑर्डर ऑफ phi इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A. एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो इमेज के ऑर्डर से सेम होगा. ओके, सो दैट मीन्स व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ ए जनरेटर. सिंस Z10 is cyclic, right? Z10 is cyclic. It will have generators. Generators का ऑर्डर कितना होगा? 10 होगा. सो जनरेटर्स का ऑर्डर कितना होगा? 10 होगा. Z10 साइक्लिक, सो इसका जनरेटर होगा. जो जनरेटर का ऑर्डर कितना होगा? ग्रुप के ऑर्डर से सेम होना पड़ेगा. ग्रुप का ऑर्डर 10 है तो जनरेटर्स का ऑर्डर कितना होगा? 10 होगा. दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द जनरेटर्स ऑफ Z10. दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ okay, 10 order element. We are to find 10 order element in Z10. How many elements Z10 have such that each order is 10? So generators of Z10s.
those element which have order 10, we will call them generators of Z10. Generators of Z10, that means 10 order element you can write. Generators of Z10 नहीं लिख के आप लिख सकते हैं 10 orders elements of Z10. देखिए अभी आपको एक बात समझना चाहिए कि Zn, राइट, Zn का जनरेटर्स कौन कौन सा होगा, जनरेटर्स कौन कौन सा होगा, वो एलिमेंट A can be generators of Zn if A and if GCD of A and N is equal to 1, ऐसा होना पड़ेगा. A element Zn का जनरेटर होगा when it is possible that A is a generator of Zn. It is possible whenever GCD of A and N is equal to 1. So you have to find such A such that A and N are co-prime. A and N, GCD of A and N is equal to 1, right? So generators of Z10 are, ये तो आपको समझने के लिए मैंने लिखा था. ओके, जनरेटर्स ऑफ Z10 आर, वो एलिमेंट कहाँ से आएगा, ये Z10 सेट से आएगा. आपको एक बार Z10 सेट को गौर से देखना पड़ेगा. उसके बाद दिस आर द एलिमेंट ऑर्डर ऑफ 1. ओके, 1 and 10 के साथ को प्राइम एलिमेंट GCD 10 और 1, इसका GCD कितना है, GCD 1 है, तो 1 एलिमेंट. ओके, GCD ऑफ 10 and 2 कितना है, उसका GCD 2 होगा, लेकिन 10 और 3 का GCD कितना है, 1 है, तो फर्स्ट एलिमेंट 1 आया, सेकेंड एलिमेंट 3 आया. उसके बाद GCD ऑफ 10 and 4 कितना है, वहाँ पे भी 2 है. 10 और 5 कितना है, 5 है. 10 और 6 कितना है, GCD 10 और 6 2 है. GCD 10 और 7 कितना है, 1 है, तो 7 भी आ गया. GCD ऑफ 10 and 9 इज इक्वल टू 1. तो कौन कौन सा एलिमेंट 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 7 आ सकता है, 9. 1, 3, 7 and 9. Those elements which can be generators of Z10 are 1, 3, 7 and 9. Generators of Z10 are 1, 3, 7 and 9. बस इतना. So we have 4 generators. So these are the elements of order 10. 10 orders element. Let's say 1 is an element which have order 10. So 1 can be mapped to 1 itself because उसका order तो same होना पड़ेगा. Next 1 can be mapped to 3. 1 can be mapped to 7 because 1 का order और 7 का order same है, 10, 10. And 1 can be mapped to 9. Right? These are the possibilities. So कितना हमें जनरेटर्स को, ओके, 10 ऑर्डर एलिमेंट्स को 10 ऑर्डर एलिमेंट में ही मैप करना होगा. जनरेटर्स इज मैप टू ए जनरेटर. सो हाउ मेनी we can have automorphism? We can have 4 automorphism. फर्स्ट ऑटोमॉर्फिज्म जिन्होंने 1 को 1 में लिया. सेकेंड ऑटोमॉर्फिज्म जिन्होंने 1 को 3 में मैप किया. थर्ड ऑटोमॉर्फिज्म जिन्होंने 1 को 7 में. फोर्थ ऑटोमॉर्फिज्म जिन्होंने 1 एलिमेंट को 9 में मैप किया गया है. सो वी कैन हैव 4 ऑटोमॉर्फिज्म एंड वी हैव टू फाइंड. सो any element which is a generator can be mapped 4 elements. Hence we can have 4 automorphism.
case 1. Okay, so अभी बात करते हैं. Now, what is an automorphism? Automorphism is a function in general. Automorphism is a function, we can say. So function जो है ना उन्होंने किसी एक element को मैप करेगा. Let's say k. Let k is any element. K is let k is belongs to Z10. Let k belongs to Z10. Then and phi is an automorphism. ये a small होना था, automorphism small a. Okay, phi is an automorphism. Then what is phi of k? Phi of k. Phi of k is equal, phi of k is equal 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus dot 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 plus 1. How many times? 1 कितने times है होगा? वो 1 जो होगा how many times? It will be k times. Okay, so it will be k times. Okay, how many times? K times. Now since phi is an automorphism, this will be automorphism में क्या होता है? Phi of a plus b is equal phi of a plus phi of b. Group operation को follow करते हैं. Phi of a plus b अगर है तो automorphism में क्या होता है? Phi of a plus b is equal phi of a plus phi of b, right? ये automorphism ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई. तो ये ग्रुप ऑपरेशन है, तो यहाँ पे भी ग्रुप ऑपरेशन होगा. So phi of 1 plus phi of 1 plus dot 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 dot. How many times? Phi of 1 कितने times होगा? K times होगा. How many times? It will be k times. It will be k times. And this is equal, since it is k times, so it is equal to k phi of 1, right? K phi of 1. So phi of k is equal k phi of 1. This will implies phi of k is equal k phi of 1. ये होता है. वो भी देखिए how many images can, okay, phi of 1 may be. Now since phi of 1 क्या क्या हो सकता है? 1 को 1 में मैप कर सकते हैं. phi of 1 is equal, sometimes it may be 1, sometimes it 1, or sometimes it may be 3, sometimes it may be 7, and last it may be 9. Phi of 1 is equal to 1, 3, 7, 9. Case 1. So case 1 हम लेते हैं जहाँ पर case 1 में हम ये लेते हैं such that phi of 1 is equal 1. So case 1 में क्या लेते हैं? Phi of 1 is equal to 1. Next phi of 1 is equal to 3 लोगा, उसके बाद phi of 1 is equal to 7 होगा, like that. So when phi of 1 is equal to 1, phi of k will be k phi of 1, and it will be k phi of 1 is equal to 1. Okay, so it will be phi of k is equal
k. Phi of k is equal to k. যিকেইটা বস্তু মোৰ হাতত দিলে মই দিলোগে গাইড so phi of k is equal to k. Phi of k is equal k. Phi of k is equal to k. So this is an automorphism. Phi of k is equal to, this is an identity automorphism. Phi of k is equal to k क्या है? Phi of 1 is equal to 1, phi of 2 is equal to 2, phi of 3 is equal to 3. This is an identity automorphism. Same element को same element में. Identity automorphism. So this is trivial automorphism. Which is a trivial automorphism? Which is a, इसको आप नाम क्या दे सकते? Phi of 1 is equal to, phi of 1 is equal क्या लिया? 1 लिया. तो phi ये 1 के लिए आया हुआ. 1 element, 1 generator 1 के लिए हमें phi 1 k is equal to k. So which is an automorphism? Which is an identity? An identity automorphism. Which is an identity automorphism. Next, phi of 1 is equal to भी ये होगा, right? Case 2. Phi of 1 is equal क्या हो सकता है? 3 हो सकता है. In this case, उस phi of k is equal, since phi of k is equal k phi of 1, ये k, this is k, phi of k is equal k phi of 1. So phi of 1 is equal to भी 3 लिया है. So इसको हम जो नेमिंग का प्रोसेस है, इसको हम नेम क्या नाम दोगा? इसको phi 3 नाम दोगा. So this is phi 3 of k. Automorphism is phi 3 is equal k phi of 3 में हमें क्या लूँगा? 3 लूँगा. तो अभी thrice k, ये क्या होगा? thrice k. Phi 3 of k is equal thrice k. This will implies phi 3 of k, this is equal thrice k. So this is an automorphism. Is it an automorphism? We will check. For being automorphism, this from the group Z10 to Z10, okay. Since k belongs to Z10, k plus k plus k, which is equal to thrice k, it also belongs to Z10, right? K belongs to Z10. So thrice k also belongs to Z10. What is? Because closure property से आएगा. Closure property of a group. So thrice k belongs to Z10, right? So phi t is from Z10 to thrice k. Since k belongs to Z नहीं, k belongs to Z10 लिया था हमने. K belongs to Z10. So k plus thrice k also belongs to Z10. So phi t is from Z10 to Z10. So according to the property of closure, phi t is from Z10 to Z10. So same group से same group में तो है. Next, इसके बाद हमें चेक करना है, is it a function? वेल डिफाइन चेक करना है. यहाँ पे वेल डिफाइन चेक करना है. हाउ टू चेक? वेल डिफाइन होने के लिए क्या होना पड़ेगा? किसी भी एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं हो सकता है. सो मान लीजिए करना है, let y1
comma y2, these are two image belongs to Z10 which is ब्रैकेट में लिखिए कोडोमेन है ये कोडोमेन ये क्या है कोडोमेन है ओके y1 y2 belongs to Z10 तो फिर क्या होगा so ये two element codomain में दिया these are the image okay so let's since they are two element in codomain so it is an image of x1 and x2 two element x1 and x2 तो हम क्या करना चाहते हैं ये कोडोमेन का सेट है कोडोमेन और ये प्री इमेज ये डोमेन का सेट है यहाँ पे प्री इमेज है यहाँ पे टू एलिमेंट लिया हमने वी आर गोइंग टू से दैट दिस टू इमेज किसी एक इमेज का ये अगर टू इमेज है तो ये फंक्शन नहीं होगा तो ये टू डिफरेंट इमेज यहाँ पे लिया तो इट्स डिफरेंट इमेज का प्री इमेज जो होगा वो डिफरेंट होना पड़ेगा ये हम दिखाना चाहते हैं डिफरेंट होना पड़ेगा ऐसे नहीं हो सकता है ये y1 y2 नहीं लेके आप so we are going to okay let y1 y2 belongs to Z10 and y1 not is equal to y2 ऐसे हमने लिया है if y1 is the image of x1 then it will be phi 3 of x1 not is equal to phi 3 of ये x2 x1 and x2 यहाँ पे है लेट्स से तो उन दोनों का इमेज था y1 and y2 तो डिफरेंट इमेज हमने लिया है ओके तो अभी ऐसा नहीं हो सकता है कि x1 इज इक्वल x2 ऐसा नहीं हो सकता है तो देखिए x1 नॉट इज इक्वल टू x2 हमें मिलना पड़ेगा यहाँ से so phi थी x1 so it will be thrice phi थी k is equal thrice k था ओके phi थी k is equal to thrice k so phi थी x यहाँ पे आप ऊपर देखिए है कि नहीं phi थी k is equal कितना था thrice k तो phi थी x1 कितना होगा thrice x1 not is equal thrice x2 यहाँ से हम ये कंक्लूड करना होगा कि x1 नॉट इज इक्वल टू x2 अगर कर सकता हूँ yes definitely you can divide both side by 3 or you can eliminate 3 from here okay thrice k यहाँ पे thrice x2 thrice x1 यहाँ पे thrice x2 okay you can so this will implies x1 not is equal x2 yes since T is an element in Z10 T is an element in Z10 so ये हो सकता है so x1 not is equal to x2 that means different image का image different okay next check करते हैं 1 check करते हैं 1 check करते हैं वन चेक करते हैं 1 चेक करने के लिए क्या होना पड़ेगा यहाँ पे है ओके
यहाँ पे किसी भी दो एलिमेंट का, ये डोमेन में ये कोडोमेन है, डोमेन का किसी भी दो एलिमेंट का इमेज सेम नहीं हो सकता है। यहाँ पे टू डिफाइन एलिमेंट लीजिए, उसका इमेज जो होगा वो डिफाइन होना पड़ेगा। लेट x1 x2 belongs to Z10, this will imply and ऐसा लिया है x1 x2 belongs to Z10 and x1 not is equal x2, ऐसे हमने लिया है। this will imply एलिमेंट अगर सेम नहीं है तो यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं, ओके, x1 not is equal to x2, x1 प्लस x1 कीजिए, यहाँ पे x2, सो यहाँ पे आप ये तो कर सकते हैं x1 प्लस x1 राइट, नॉट इज इक्वल टू x2 प्लस x2 ये भी कर सकते हैं, और नहीं तो ये भी कर सकते हैं आप। वो सेम बात है। ओके, thrice x1 not is equal thrice x2, is it will imply x1 not is equal x2 to this will imply thrice x1 not is equal thrice x2, okay, this will implies phi 3, what is thrice x1, this is equal phi 3 of x1 and this is not is equal phi 3 of x2। डिफाइंड एलिमेंट का इमेज सेम नहीं है, इमेज भी डिफाइंड होगा, तो दिस इज मेनी वन नॉट मेनी वन, सो इट इज 1 1, hence 1 1, hence 1 1। वो आपको पता ही है, वेल डिफाइन और 1 1 दोनों रिवर्स सिस्टम है। वेल डिफाइन जैसे करते हैं उसका रिवर्स कीजिए तो आपको 1 1 मिलेगा, और 1 1 का रिवर्स कीजिए आपको 1 2 मिलेगा, और सॉरी मेन वेल डिफाइन मिलेगा, राइट। नेक्स्ट यू हैव टू चेक ऑन टू चेक करना है, ऑन टू चेक करना है। हाउ टू चेक ऑन टू? To check onto, you can do that. Take any element in the codomain set. ये कोडोमेन का सेट है, कोडोमेन, ये डोमेन का सेट है। आप यहाँ पे किसी भी एक एलिमेंट लीजिए, उस एलिमेंट का यहाँ पे एक प्री इमेज एग्जिस्ट होना पड़ेगा, इमेज का यहाँ पे एक प्री इमेज एग्जिस्ट होना पड़ेगा। लेट सो आप ये एक लाइन में भी लिख सकते हैं, सिंस every 1 1 function, every 1 to 1 function from the same set every 1 1 function from the same set to same set, or you can write every 1 1 function from a set to itself, every 1 1 function from a set having
same numbers of element. Every one function from a set to itself every one function from a set to itself is onto also. You can write this statement, or you can write every one function from a set having every one function between two डिफरेंट सेट भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वहाँ पे नंबर्स ऑफ एलिमेंट सेम होना पड़ेगा. हैविंग सेम कार्डिनलिटी इज ऑन टू ऑल्सो. मतलब ये एक सेट है, ये भी एक सेट. यहाँ पे मान लीजिए 3 एलिमेंट है, यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तो यहाँ पे अगर वन फंक्शन एक्सिस्ट होते हैं तो वो फंक्शन ऑन टू भी होगा. मतलब यहाँ पे सेम नंबर्स ऑफ एलिमेंट है, यहाँ पे भी सेम नंबर्स ऑफ एलिमेंट है, इन दोनों में सेम नंबर्स ऑफ एलिमेंट है. तो अगर किसी भी फंक्शन ऑन टू है वो 1 1 होगा, किसी भी फंक्शन अगर 1 1 है तो ऑन टू होगा. ये भी हो सकता है, राइट. और सो और यू कैन राइट दिस स्टेटमेंट, so it is on to, or you can do another way also. Take an element in the codomain, let y belongs to Z10, let y belongs to Z10. तो then क्या होगा, ये आपके लिए नहीं है, मैंने हाँ कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. ये स्टार मैंने दे दिया. अब चाहे तो ये स्टेटमेंट नहीं लिख करके ये कर सकते हैं. let y belongs to Z10 since 3 is a generator of Z10, so y is equal thrice n होगा, for n belongs to Z होगा, right? This will imply y equal thrice okay thrice pi 3 of n. So y is equal, ये thrice n is equal pi 3 of n. thrice n is equal pi 3 of n होगा. y is equal pi 3 of n. y is equal pi 3 of n, and this will imply y is equal pi 3 of n is equal आप इसे लिख सकते हैं pi 3, ये pi 3 of n. सो ऐसा एक एलिमेंट n है. So what is n? n is congruent to n अगर मोडुलो 10 करते हैं, किसी भी एक एलिमेंट k होगा, n is congruent to k मोडुलो 10, ये होगा, राइट. ये तो है नहीं, so यहाँ पे pi 3 of आप k भी लिख सकते हैं. So there is an element k in Z10 such that pi 3 of k is equal to y. ऐसा हो सकता है. Because why we are putting in the place of n k? Why we are putting k in the place of n? Because n एक इंटीजर है, वो अगर मोडुलो 10 में हम करते हैं, लेट्स से n is equal to 12 है, तो मोडुलो 10 में क्या होगा, इस 2 मोडुलो 10, राइट. सो 2 क्या है, Z10 में है, और k किसको दिया था, Z10 में किसी भी एक एलिमेंट को हमने दिया था. सो यही बात है, हमने ये कर सकते हैं. अब ये प्रोसेस, ये जो है ना ऑन टू प्रोसेस, आप यहाँ पे भी ख़त्म करेगा. आई होप ये प्रोसेस
मैंने खुद किया है और पूरा प्रॉब्लम तो मैंने खुद ही किया है, लेकिन ये पोर्शन आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करेगा तो बेटर ही होगा। मेरा I think this is true, okay, but some student may be confused why we are putting k in place of n। अगर आपको ये यहाँ पे समझ में आ गया है कि आप क्यों पुट कर रहा हो तो कोई बात नहीं, नहीं तो नहीं करेगा। वो अभी था सो हैंस अभी यहाँ पे लिखूंगा सो हैंस, बहुत लेंथी प्रॉब्लम है। फाइव थ्री ऑफ k इज इक्वल थाइस k इज एन automorphism in Z10। Similarly, we can prove केस 4, केस 3 में क्या होगा? केस 3 में केस 3 में फाइव ऑफ के इज इक्वल टू क्या था? थाइस के था। फाइव ऑफ के इज इक्वल टू के, ओके, फाइव ऑफ के इज इक्वल के फाइव ऑफ 1 था, ये पहले हमने निकाला था। सो केस 3 में हम क्या होगा? फाइव ऑफ 1 इज इक्वल केस 3 फाइव ऑफ 1 इज इक्वल 1 लिया, उसके बाद 3 लिया, वो भी 7, फाइव ऑफ 3 1 इज इक्वल 7 लिया। तो अभी क्या होगा? अगर फाइव ऑफ 1 इज इक्वल 7 है, सो फाइव 3 ऑफ के इज इक्वल, अभी ये बात हो, क्या कर रहा हो? फाइव ऑफ 1 इज इक्वल टू 3, अभी क्या करोगे यहाँ पे? देखिए, सिंस फाइव ऑफ के इज इक्वल के फाइव ऑफ 1 ये था, तो यहाँ पे हम क्या करोगे? फाइव ऑफ के, सो फाइव, अभी ये फाइव ऑफ 1 इज इक्वल क्या लिया है? 7, सो यहाँ पे फाइव 7 ऑफ के इज इक्वल 7 के आपको मिलेगा। Similarly, like the process in case 2, like the process in case 2 and case 1, similar process. So you can say phi 7 of k is equal 7k, it is an automorphism, you can say. Like the similarly the so phi 3 of k is equal 7k is also an automorphism is also an automorphism of Z10, ब्रैकेट में लिखिए proof is same with केस 2, ओके। केस 2 में जो प्रूव हमने किया कि फाइव 3 ऑफ के इज एन ऑटोमॉर्फिज्म, सिमिलर प्रूफ इज विल बी टेकन हियर। फाइव 7 ऑफ के इज इक्वल 7 के लिए, फाइव 7 ऑफ के इज इक्वल 7 के लिए। सो केस 4 यानी लास्ट केस, यहाँ पे क्या लिया? फाइव ऑफ 1 इज इक्वल हमने 9 ले सकता हूँ, तो हमें सो वी विल हैव फाइव 9 ऑफ के इज इक्वल 9k is an automorphism of Z10. Like
above. Okay, so hence we have find hence we have find that automorphism of Z10 are phi 1 of k is equal k, phi three of phi 3 of k is equal thrice k, phi 7 of k is equal 7k, and phi 9 of k is equal 9k. These four are automorphism of Z10. So hence we have calculated, we have find all the automorphism of Z10. So this is the question. This is a lengthy question. I hope you will watch repeatedly. If you